नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ आसाम में आप सभी को स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं आसाम राज्य तिनसुकिया ज़िला में और यहाँ तिनसुकिया ज़िला के अंतर्गत ये जो एरिया है इस एरिया को तामुली खात बोला जाता है। और यहाँ हमने देखने को मिला संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ बैठे हुए और यहाँ हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से दो शब्द लेंगे। आखिरकार आज जो संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों का सहाय कर रहे हैं, तो उसके बारे में दो शब्द लेंगे भाई साहब से। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, मोर नाम रिंकू शइकिया है। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के एक चला रखी है जिसमें गरीब लाचार असहाय परिवार को राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी प्रदान कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? হয়, এইটো এটা বহুত সন্ত ৰামপাল মোৰ গুৰু মহাৰাজে এটা বহুত ভাল মিছন চলাই ৰাখিছে, যিটো আপোনাৰ যিটো সহায়ত সকলো দুখীয়া মানুহে যিসকলে এমুঠি খাই এমুঠি নোখোৱাকৈ আছিলে আৰু যিসকলে আপোনাৰ পইচা অভাৱত শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰি আছিলে আৰু যিসকলে পইচা অভাৱত আপোনাৰ চিকিৎসা আপোনাৰ যেনেকৈ ধৰি লওক কেঞ্চাৰ ৰোগৰ নিচিনা মাৰাত্মক ৰোগত আপোনাৰ ভুগি আছিলে, পইচা অভাৱৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিব পৰা নাছিলে। এই যিটো সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে যিটো অন্নপূৰ্ণ মুহিম মিছন আৰম্ভ কৰিছে, সেই মিছনৰ জৰিয়তে এই যিসকল দুখীয়া লোকক আজি এসাঁজ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিছে, ধুনীয়াকৈ শুব পাৰিছে আৰু চিকিৎসাৰ বাবে কোনো সমস্যা নাইকিয়া হৈছে। কাৰণ বৰ্তমান এতিয়া এটা সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে এটা বাণী আছে যে ৰুটি কাপোৰ চিকিৎসা আৰু মকান প্ৰত্যেক জৰুৰত সকলক সহায় কৰিব কবিৰ ভগৱানে। গতিকে এই সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে এই সহায়ত আপোনাৰ বৰ্তমান আৰু এইটো যি অন্নপূৰ্ণ মুহিমৰ সহায়ত আৰু এটা সহায় কৰি আছে, যি বানপীড়িতসকলক বৰ্তমান যি পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা এইখিনি যিসকলক আপোনাৰ পানীৰ কাৰণে খেতি কৰিব পৰা নাছিলে, সেই খেতিৰ পৰা পানী উলিওৱাৰ সহায় কৰিছে। মটৰ পাইপ এই সকল বস্তু মানে সামগ্ৰী প্ৰত্যেক কৃষকক এই যি পানীৰ সমস্যাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে। বৰ্তমান সেই কাৰণে এটা সুন্দৰ মিছন আৰম্ভ কৰিছে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে, যিটো মিছন বৰ্তমান অকল হাৰিয়ানাতে নহয় গোটেই বিশ্বত এই মিছন আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এই বিষয়টো আমি খুবেই আনন্দিত যে এনেকুৱা এজন গুৰু আমি পাইছোঁ, তেওঁ শৰণ পাইছোঁ। আমি এটা বহুত সৌভাগ্যৱান নিজকে। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं जेल में फिर भी संसार को सुखी देखना चाहते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो अन्य धर्मगुरु से तुलना करना चाहता है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? এতিয়া শুনক, বৰ্তমান অসমতেই নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বহুত ধৰ্মগুৰু আছে, লাখৰ তুলনাত ধৰ্মগুৰু আছে। কিন্তু এই যি সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে যিটো অন্নপূৰ্ণ মুহিম আৰম্ভ কৰিছে, বৰ্তমান সকলৰ এই যি ধৰ্মগুৰু আছে সেই ধৰ্মগুৰুসকলে সেইটো কৰিব পৰা নাই। কাৰণ তেওঁলোকে কেৱল পইচা ল'বহে জানে, তেওঁলোকে পইচা খৰচ কৰিব নোৱাৰে। আৰু বৰ্তমান যিসকল মানে আপোনাৰ যি সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে যিটো আৰম্ভ কৰিছে অন্নপূৰ্ণ, সেইটো মুহিম কেৱল জেলত থাকিও এজন সন্তে যে এনেকুৱা এটা মুহিম আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁ সাক্ষাৎ পূৰ্ণ পৰমাত্মা হয়। তেওঁ এজন সাধাৰণ ব্যক্তি নহয়, আপোনাৰ মোৰ দৰে এজন সাধাৰণ সন্ত নহয়, এজন ব্যক্তিও নহয় সাধাৰণ। তেওঁ স্বয়ং এজন পূৰ্ণ পৰমাত্মা, তেওঁ যে স্বয়ং কবিৰ পৰমাত্মা হয়। বৰ্তমান যিসকলৰ যি ধৰ্মগুৰু আছে, সেই ধৰ্মগুৰুসকলকো আপোনাৰ বহুতবাৰ তেওঁ জ্ঞানতো আপোনাৰ চেলেঞ্জ কৰিছে, কিন্তু কোনো এজন ধৰ্মগুৰু তেওঁ আগত আহিবলৈ সাহস নকৰিলে। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে এটা নিজে বিচাৰ কৰি চাব যে আপোনাৰ এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া জেলত যায়, তেওঁলোকে কেৱল জেলৰ পৰা কেনেকৈ ওলাম সেইটো ভাবি থাকে। কিন্তু সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে জেলতে বহি, যেনেকৈ আমি যেনেকৈ আগতে শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান মানিছিলোঁ, শ্ৰীকৃষ্ণটো স্বয়ং আপোনাৰ জেলতে জন্ম হৈছে। তেওঁ নিজৰ পিতৃ মাতৃক কিমান বছৰৰ পিছত গৈ আনিছে, কিন্তু সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে তেওঁ পূৰ্ণ পৰমাত্মা হয়। এইটোতে প্ৰমাণ হৈছে যে তেওঁ এজন পূৰ্ণ পৰমাত্মা হয়। কাৰণ যি কাম বৰ্তমান যি চৰকাৰো কৰিবলৈ অসমৰ্থ হৈছে, সেই কাম বৰ্তমান সন্ত ৰামপাল মহাৰাজে কৰি আছে। সেইটো বাবে আমি মানিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে তেওঁৱেই এজন পূৰ্ণ পৰমাত্মাৰ কাৰণে এইখিনি কাম কৰিবলৈ মানে সম্ভৱ হৈ উঠিছে। जी, तो ये रहा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के विचार, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज जी
जो कार्य कर रहे हैं, गरीब असहाय परिवार को राहत सामग्री प्रदान कर रहे हैं। और स्टेट हरियाणा और पंजाब में जो गांव डूबे हुए थे उस वहां भी राहत सामग्री प्रदान किए। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हम जानकारी प्राप्त किए, जो कि एसए न्यूज़ में आप लोगों को दिखाए। और यहाँ और भी श्रद्धालु है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, उनसे भी दो बातें लेंगे। क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम अजीत धनवार है। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो आज कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो कि यहाँ बहुत संत है, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहा है उसके संबंध तो अलग। जो सरकार का काम था वो संत रामपाल जी महाराज वो कार्य करके दिखाया। तो आज जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी महाराज मतलब संसार को सुखी देखना चाहते हैं। हमने सुना है जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है वो बोलते हैं कि हमारे गुरुजी जो कार्य कर रहे हैं ये सभी मानव के लिए है, जो कि मानव उद्धार के लिए हमारे गुरुजी आए हैं। तो किस नज़रिए से देखते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज एक परमात्मा है, वो कबीर भगवान का अवतार है, कि इसलिए उसी नज़र से हम लोग देखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सा। तो ये था आज का रिपोर्ट, और एसए न्यूज़ आसाम में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे के कवरेज आप लोगों को दिखाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ एसए न्यूज़ आसाम।